appointed by university? यह सूचित किया जाता है कि एमएड चतुर्थ सेमेस्टर लघु शोध योजना में अनुशंसा के संदर्भ में सत्र 2019-20 से अब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है सर। विद्यार्थियों की मार्किंग स्कीम अंक बाय परीक्षा 150 बाय परीक्षा 2 बाय परीक्षक दो बाह्य परीक्षक रहेंगे और एक इंटरनल रहेगा। टोटल 150 हो जाएगा। 150 हो जाएंगे तो 50 तो इंटरनल जो है वो कॉलेज भेज देगा और 100 जो है विच वॉज टू बी गिवन बाय द एक्सटर्नल। दिस वॉज द स्कीम। यस नाउ मतलब दिस हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इफ यू लॉन्च एनी स्कीम मतलब दैट वुड बी एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट ईयर, नॉट फॉर द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब। यस Now Malat, second submission is they have filed reply Malat. In that reply Malat, they have filed the same scheme. On page number 12 of the reply Malat. यस This is their document Malat. What they Yes. are relying upon. इसमें भी Malat आप देखेंगे प्रैक्टिकम और डेजर्टेशन के मार्क्स दिए हुए। यस ये जो टेली चार्ट बना हुआ टेबल और लाइंस बने हुए, यस इसमें आप देखें सर लास्ट लाइन प्रैक्टिकम कोर्स 17 डेजर्टेशन यस है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एट द टॉप उसका वो क्राइटेरिया दिया हुआ है। यस इंटरनल के रहेंगे 50 और एक्सटर्नल के रहेंगे 100। यस इट इज देयर डॉक्यूमेंट। आई एम ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि दैट एनेक्चर P1 is the marks given by the external which was out of 100 malad, and that has been wrongly reduced by the university in the final mark sheet by saying कि नहीं अब ये 50 में से दिए जाएंगे। अब इनकी प्लीडिंग सर इसलिए भी कॉन्ट्रेरी है कि अगर ये 50 में से देते हैं तो भी 77 और ऐसे मार्क्स कैसे आएंगे फिर, तब तो 50 से कम होना चाहिए। यस So malad they have wrongly and manipulatively reduced the marks of the students without any rhyme reason and without any jurisdiction malad। और malad the scheme says कि अगर कोई dispute होता, अच्छा no malad there is no dispute between the internal marks and external marks। External marks are given by external and internal marks are awarded by internal, and it is sent separately by the college to the university which has duly been sent. They are admitting that. यस And Malad, my humble submission is that Malad, they are trying to confuse the policy which should be prospective with the retrospective effect. Result declare होने के बाद तो there may not be any amendment in the mark sheet. So they have wrongly reduced Malad. Or Malad, in the second submission is that Malad, on each and every day in newspaper Malad, this DAVV universities news are published Malad in respect of these different kind of courses students marking scheme कि ना कॉपियां चेक करी हैं और की हैं तो गलत की हैं। रोज प्रोटेस्ट धरना हो रहा है। कॉपीज ऑफ द न्यूज़पेपर मलट एवरी डे मलट देयर इज अ न्यूज मलट अबाउट दिस DAVV यूनिवर्सिटी। यस They did not go through the merits of the case मलट, they are not even checking the copies मलट। यस यस मिस्टर शर्मा, how do you justify your Yes, action? Prior to starting on my submission, Lordship, I would Yes. like to draw kind attention to Honorable Court. The annexure R4 and the अधिसूचना dated 12/8/2022। R4 हाँ सर, जो R4 का इन्होंने सितंबर और अगस्त का जो डॉक्यूमेंट बताया है, these documents are not a new document, not with respect to the implementation of any scheme, Lordship. yes They are saying कि इसका retrospective effect होना चाहिए, but this is the clarification because of these confusion, Lordship. This is not a our new document. We are not saying, Lordship, कि अब ये वाली चीज लागू होगी। Sir, university is for the welfare of the student. University is also aware with the fact that once the result is declared and subsequently when the notification is published, that notification will not affect the result. But Lordship, my humble submission, these notification are for the clarification of such type of confusion. Now I start our submission, Lordship. yes Lordship, kindly consider annexure R1. yes This is a scheme of the university with respect to the MEd curriculum 2-year semester course.
This scheme is approved by regulation of NCT 2014 and this scheme is applicable. R1 में kindly consider page number 8 जो it starts from page number 8 and operative है सर जो page number 12 first में. Yes. This scheme is in the implementation from the very beginning and again for the sake of these documents are only the clarification. This is the dissertation and it is one is of out of 50 and another one is out of 100. सर जो internal के marks हैं वो 50 में से होंगे और जो 100 हैं वो उसके दो dissertation के 50-50 का है. Now Lordship please to consider annexure R2 पेज नंबर 15 उससे भी सर क्लियर हो जाएगा पॉइंट नंबर 8 which is the statute 29 appointment of the examiners पेज नंबर 15 में kindly consider. Yes. Our submission Lordship college failed to understand the scheme and college has awarded the marks instead of 50 out of 100 and secondly what college has done सर बाद में जब हमारी ऑनलाइन लिंक जाती है यूनिवर्सिटी की तो सब वो केवल 50 नंबर की जाती है तो जब उन्होंने 50 में से मार्क्स दिए वो हमने मार्कशीट में अपलोड कर पेज 12 में ऐसा कुछ है क्या सर अगेन देखिए पेज नंबर 12 पेज 12 के पहले सर लॉर्डशिप काइंडली कंसीडर पेज नंबर 15 पॉइंट नंबर 18. यस पेज नंबर 15 point number 18 which is of statute 29. Yes. In the case of subject. Yes. In the case of a subject for MA, MSc, MCom and MPE examinations where there is permission in lieu of a paper, there shall be a board of 2 examiners for reading the thesis. The maximum number of marks for the thesis shall be equally divided between the 2 examiners, each of whom shall mark the thesis independently. If the valuation of these 2 examiners differs by 20%, the thesis shall be referred to the 3rd examiner, who shall award out of half of the maximum marks for the thesis. The aggregate of the 2 or 3 award nearest to each other and to the best advantage of the candidate shall be taken as the correct valuation. Now Lordship please to consider page number 12 जो इन्होंने अभी बताया. So the practicum desertion. How this would apply in the present case? Clause 18. This relates to thesis. No, Lordship, this is the statute number 29. Yes, clause 18. How it would attract in the present Lordship, case? This is also thesis, Lordship. This is a, Yes. Sir, ये भी वही मैं बताना चाह रहा हूँ, sir. Lordship, please to consider page number 12. Practicum, course number 17, dissertation, sir. Sir, ये dissertation is thesis only, Lordship. जो dissertation है वो thesis ही है, sir.